बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस इकनॉमिक्स ECO 400 के लेक्चर 8 में खुश आमदीद। कोई स्ट्रक्चर इस तरह का है कि पहले चंद मिनट हम पिछले लेक्चर की बात करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिवाइज ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स विच वी लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर, और उसके बाद आगे चलेंगे कि आज हम क्या सीखना चाहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, एंड वी स्टार्टेड with the concept that the goal of the firm is to maximize profit, and which is equal to the total revenue minus total cost. टोटल रेवेन्यू जो है इस बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे मेजर करते हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर हम प्राइस को किसी चीज़ की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट बेसिकली इज द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फर्म, एंड दैट इंक्लूड्स when we talk about total opportunity cost, that means all types of cost, which is whether it is explicit cost or implicit cost. Now दोनों में डिफरेंस की भी हमने बात की कि क्या फ़र्क होता है। explicit cost is the cost which basically firm जो है directly in the form of money pay कर रही होती है। like for example if they hire labor, so they have to pay wage or the price of labor which is wage to them. So that is the one of the explicit cost. इसी तरह आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल जो ख़रीदते हैं, जब आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो यू हैव टू पे द मनी, एंड दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कास्ट। और जब हमने इम्प्लिसिट कास्ट की बात की तो उससे मतलब ये है कि द कास्ट विच इज़ फोरगॉन बाय द इंडिविजुअल बाय द फर्म, सो which he or she can earn while using his services or his capital at some other place. Like for example, if we talk about if I start my own business and I'm working in this university as a professor, right, so I am getting some salary every month. So जब मैं अपना business शुरू करूँगा तो जो salary मिल रही है मुझे, मैं उसको sacrifice करूँगा, उसको forego करूँगा, right? So that is one of the kind of opportunity cost, one of the implicit cost. Similarly मेरी कुछ सेविंग होंगी, like अगर मेरे पास कोई 10 लाख रुपए की सेविंग है, उसी को बिजनेस में लगाता हूँ। अगर यही 10 लाख बैंक में रहता है तो उस पर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, राइट, पर एनम। सो दैट इज़ आई एम फॉर गोइंग वाइल स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, और इसको हम इम्प्लिसिट कास्ट का नाम देते हैं। अब जब हमने प्रॉफिट की बात की तो दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, वन इज़ द इकोनॉमिक प्रॉफिट, द अदर इज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट। जब इकोनॉमिक प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, एंड इन दिस केस cost includes both types of cost, whether it is explicit and implicit cost. और जब हम अकाउंटेंट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड माइनस टोटल कास्ट, बट द कास्ट ओनली इंक्लूड्स द एक्सप्लिसिट कास्ट कंपोनेंट। सो अगर आप इस डेफिनेशन से देखें, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कम होगा और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लेकिन आप याद रखिएगा, जब इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं, एक प्रॉफिट की बात करेंगे, एक प्रॉफिट का जिक्र करेंगे, तो उसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। उसके बाद हमने बात की प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप, इट इज़ द आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ कैपिटल एंड लेबर। अगर हम कुछ यूनिट्स कैपिटल के लगाते हैं, कुछ लेबर के लगाते हैं, एंड यू प्रोड्यूस समथिंग, सो दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन। हमने देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन को लिख के कैसे लिखा जाता है। सो वी रोट दैट Q इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। इट मीन्स Q इज़ डिपेंडिंग ऑन कैपिटल एंड लेबर, जिसमें आप एक सर्टन यूनिट्स कैपिटल के लगाते हैं, सर्टन यूनिट्स लेबर के लगाते हैं, और एक ख़ास मिकदार आप किसी चीज़ की प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोडक्टिविटी मेजर्स की बात की। वी टॉक्ड अबाउट total product, we talked about average product, we talked about marginal product. तो total product की जब हमने बात की, it is the output that can be produced, total output produced by using capital and labor. When
we talked about average product, we said that it is the output per worker. अगर आप 10 लोग काम में लगाते हैं तो हर एक वर्कर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो that is the average product of labor. Then we talked about the marginal product of labor or marginal product of capital की हमने बात की. It is the change in total output due to one additional unit of labor or capital. So MPK, it is denoted by MP, marginal product of capital and marginal product of labor, and it is calculated as MPL is equal to delta L or delta Q or delta L, the change in output due to change in labor. उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए, एक टेबल के ज़रिए वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन फंक्शन और टोटल कास्ट की बात की, और फिर हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट किया कि किस तरह टोटल कास्ट और टोटल प्रोडक्ट को आप रिलेट कर सकते हैं. एंड देन वी end up with our previous lecture. So this was the brief overview of the previous lecture. So आज हम क्या सीखेंगे, what we are going to learn today, तो उसकी हम बात करते हैं. And the cost of production part 2, and the sequence of our lecture is like that. We are going to discuss various measures of cost first, and then we'll talk about costs in the short run and in the long run. So these are the two things which we are going to learn today. Now, cost of production may be divided into fixed cost and variable cost. Now, what is the fixed cost? What is the variable cost? Now, fixed cost is that cost which is fixed in the short run, that cannot be changed in the short run. Like for example, the cost of land, the cost of building, the cost of equipment, cost of machinery installed in the production plant, right? So all these sort of costs are known as the fixed cost. Now, what is the variable cost? That is the cost that can be changed in the short run also. And for example, the cost of labor, right? So can be a variable cost, a cost of raw material which is being used for the production of a good, right? So these are the variable cost. Now, now fixed cost. So we can say that fixed costs are those costs that do not vary with the quantity of output produced. And variable costs are those costs that do vary with the quantity of output produced. Now, total cost is divided into two parts, two types. One, total cost can be written as total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost, right? So whenever the firm is interested to calculate total costs, so they have to add up the total fixed cost and total variable cost. Now, average cost and other measure of cost. Average cost can be determined by dividing the firm's cost, that is the total cost, by the quantity of output produced. So average cost is the cost of each typical unit of output produced. Now as we said that total cost is equal to total fixed cost and total variable cost. Now average, so similarly, so we have different types of average fixed cost. अगर आप इस स्लाइड को देखें तो first we have average fixed cost, AFC, and that is equal to fixed cost divided by quantity or divided by output produced, so is equal to FC over Q. Average variable cost is equal to variable cost divided quantity is equal to variable cost divided by Q. Now average total cost is equal to total cost divided by quantity or output produced is equal to total cost over Q. So in similar way as we said that total cost is equal to average fixed cost plus total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost. Similarly, average, अगर आप लास्ट लाइन देखें इस स्लाइड की, तो एवरेज टोटल कास्ट विल बी इक्वल टू एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज
वेरिएबल कास्ट। अब ये ऐसे फार्मूले हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, बट बिकॉज नेक्स्ट जो हम हम एक टेबल और एग्जांपल की बात करें तो उसमें यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर कि हाउ वी कैन डिफाइन डिफरेंट मेजर्स ऑफ कास्ट। उसके बाद हम बात करते हैं देयर इज अनदर मेजर्स ऑफ कास्ट विच इज मार्जिनल कास्ट। Marginal cost measures the increase in total cost and that arises from an extra unit of production, right? So it is the change in total cost due to change in output. So marginal cost is equal to delta TC over delta Q, and that is delta TC means change in total cost, delta Q means change in total quantity. Now suppose हम बात करते हैं if the firm is producing 100 unit of output, Q is equal to 100, and in that case the total cost is suppose 5,000, right? Now suppose the firm output produce increase from 100 to 110 units, and the total cost increases from 6,500. How much is the addition in total cost due to change in the output? What is the change in output here? Q, change in output is 110 minus 100 is equal to 10. Now change in total cost is 6,500 minus 5,000, so that is equal to 1,500. Now what will be the marginal cost in this example? Marginal cost will be equal to, as we know that it is equal to delta TC over delta Q. Delta TC is how much here? 1,500, 1,500 divided by how much is the change in output? That is 10. So 150 is the marginal cost in this case. So अगर 10 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं फर्म ने तो उन 10 यूनिट्स की जो एडिशनल कास्ट आती है, द चेंज इन टोटल कास्ट आती है, दैट इज $150 or 150 rupees, whatever the currency you are using. So marginal cost help answer the following questions. How much does it cost to produce an additional unit of output? अगर आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी एडिशनल कास्ट आती है? तो इस चीज़ का जो जवाब है, इस चीज़ का जो आंसर है आपको मिलता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कास्ट। सो मार्जिनल अगर आप याद होगा आपको तो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था फर्स्ट 10 प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि रैशनल पीपल्स थिंक एट मार्जिन मींस द पीपल्स कंपेयर द मार्जिनल बेनिफिट और द मार्जिनल प्रोडक्ट विद द मार्जिनल cost, right? So if marginal product is greater than marginal cost, so the firm continue to produce additional unit of output. But if marginal benefit or marginal product is less than and then the marginal cost, of course they will stop producing that output. Or if MP, marginal product, is equal to marginal cost, so they will continue to produce till the point where MP is equal to MC. So marginal or the marginal cost and marginal benefits are the concept of marginal is very important application or usefulness in economics, right? So this helps the manager, this helps the businessman, this helps the firms to decide how much they should produce, till how long they continue to produce a certain product. इन जितने भी अभी हमने मेजर्स की बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मेजर्स ऑफ कास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टोटल कास्ट, और उसके बाद हमने देखा कि टोटल कास्ट को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, दैट इज़ फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। उसके बाद हमने बात की एवरेज फिक्स कॉस्ट की, एवरेज वेरिएबल कास्ट की बात की, फिर हमने एक इन दोनों को मिला के वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरेज टोटल कास्ट, एंड देन वी हैव
discussed about the marginal cost of the production or the product. इतनी जितने भी measures की हमने बात की इन्हीं को हम explain करेंगे with the help of table. अगर आप इस table को देखें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉलम हैं. पहले कॉलम में हम quantity of lemonade the within bracket glasses per hour produced. Total cost is the second column. Then we have a fixed cost to produce that product. We have a variable cost for each unit of product. Then the next column is about average fixed cost, average variable cost. Then we have average total cost, and then the last column is about the marginal cost. Now we start with 0 units. In that case the total cost is $3, because as we know that the total cost is equal to fixed cost plus variable cost. अगर अगले कॉलम में आप देखें the fixed cost जो है the land cost of land or something else is $3, and the variable cost, because you are not producing anything, 0 units produce कर रहे हैं तो variable cost इसमें नहीं होगी. Total cost will be 0. So total cost will be 3 or variable cost will be 0. What will be the average fixed cost? No, it is nothing, because every fixed cost is equal to fixed cost divided by quantity, which is 0. Similarly variable cost भी नहीं होगी, average total cost भी नहीं होगी. And what would be the marginal cost? No marginal cost here, because it is the first unit or first quantity. And the marginal cost is the change in total quantity due to change in total cost due to change in quantity. Now if the firm start producing 1 glass per hour, right, of lemonade, so we say that the total cost is equal to 3.30. so this has further 2 parts. Fixed cost, which is $3, which will remain same for each unit, because the time period is short, so it is fixed for all units of production. And the variable cost is here 0.3. so if we combine these 3 plus 0.3, we get total cost 3.30. Average fixed cost, as we know that average fixed cost is equal to fixed cost divided by Q. Now fixed cost is 3, Q is 1, 3 by 1 is 3. Average variable cost is variable cost divided by Q. So variable cost here is 0.3 by Q, which is 1, so that is equal to 0.3. Similarly, average total cost is equal to total cost divided by quantity. Now total cost here is 3.30 divided by quantity, which is 1, is equal to 3.30. And what would be the marginal cost? That is the change in total cost due to change in output. What is change in total cost? That is TC2 minus TC1. TC2 is 3.30, TC1 is 3.00. so change in total cost is 0.3, or what is the change in output? That is 1 minus 0. so change in total cost is 0.3, change in quantity is 1. 0.3 divided by 1 is equal to 0.3 is the marginal cost of first unit of output produced. Similarly एक और हम यूनिट की बात करेंगे, उसके बाद आप इसी तरह सारे टेबल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और सारे मेजर्स को easily निकाल सकते हैं. If the firm continue to produce from 1 to 2 units, so the cost total cost will increase from 3.3 to 3.8. Again it has 2 parts. 3.00 is the fixed cost, 0.8 is the variable cost. So if we add up these 2 variable and fixed cost, 3 plus 0.8, this will become the total cost, and which is 3.80. इसके बाद हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं उसी तरह. एंड एज वी नो दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी. नाउ फिक्स कॉस्ट इज here is 3, quantity is 2, so average fixed cost will be 1.5. average variable cost here is equal to variable cost, which is 0.8 divided by quantity, which is 2, so we'll get 0.4. एवरेज टोटल कास्ट, इसके 2 तरीके निकालने के. एक तो तरीका ये है कि टोटल कास्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो भी आपको एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाती है, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि यू कैन सम अप
these two column average fixed cost plus average variable cost. अगर 1.5 को plus 0.4 के साथ जमा कर दें तो you will get the average total cost, and which is 1.90. Now what would be the marginal cost here? Now what is the change in total cost? That is 1.9 minus 3.0. So what is the change in output? 2 minus 1. So अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं उसके साथ तो you will get 0.50 is the marginal cost. तो similarly आप continue, if the firm continue to produce more unit and they continue up to 10, so you can calculate different types of cost. अब हम last unit की बात करेंगे, उसके बाद हम will move to the next slide. अगर if the firm continue to produce till 10th unit of the product, so what is the total cost here? That is the 15, and what is the fixed cost here? 3. It is the same. Now variable cost here is the 12. So if you add up these two, 12 plus 3 will get 15. Then average fixed cost is the average fixed cost divided by output produced, so which is 3 by 10 to 0.3. And then average variable cost is the variable cost, which is 12 divided by 10, 1.2. एवरेज टोटल कास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके निकाल सकते हैं विद द क्वांटिटी, और यू कैन ऐड अप दीज टू कॉलम्स विच इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट. अगर 0.3 को 1.2 में जमा करें तो 1.5 आपको मिल जाएगा. मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? चेंज इन टोटल कास्ट इज 15 माइनस 12.90. अगर आप सेकंड कॉलम में देखें टोटल कॉस्ट में चेंज क्या आई, 15 minus 12.90 divided by 10 minus 9, so this will give us 2.10 change in that will be the marginal cost of 10th unit of output produced, right? So this is how you can calculate different measures of cost by using this table. एक और एग्जांपल के जरिए marginal cost को explain किया गया है. Total cost, we have 3 columns in this diagram, in this table. The same product, lemonade, and then we have quantity, total cost. पिछले ही डायग्राम से हमने टोटल कॉस्ट ली और हमने थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि किस तरह मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, वही चीज़ हमें रिपीट करें, बट लेकिन बाकी वी हैव excluded the other columns of the table and just 3 columns just to explain you concept of मार्जिनल कास्ट कि आप मार्जिनल कास्ट कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज़ की. तो वी हैव 3 कॉलम्स इन दिस टेबल. अगर आप देखें पहले कॉलम में हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, दूसरे में टोटल कॉस्ट और तीसरे में मार्जिनल कास्ट. एज वी नो दैट द फार्मूला फॉर मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, राइट. अगर आप देखें कि व्हाट इज द total cost of the first unit 3.30, so change in total cost is equal to 3.30 minus 3. This is equal to 0.3, right? So how much is the change in Q here? 1 minus 0, which is 1. So if we divide this 0.3 by 1, we'll get 0.3, which is the marginal cost here. So the marginal cost of producing 1 unit is 0.3. Similarly, नेक्स्ट यूनिट की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 3.80. सो हेयर चेंज इन TC2 ऑफ सेकंड यूनिट, 2 is for second unit, is equal to 3.8 minus 3.30. This will be equal to 0.5, and then change in output here is 2 minus 1, which is 1. So marginal cost here will be equal to 0.50 over 1, so that is 0.5. So the marginal cost for second unit of the product is equal to 0.5, and similarly you can continue till the 10th unit. अब 10वें यूनिट की हम देखते हैं. सो यहाँ पे चेंज इन TC total cost 10th is equal to 15 minus 12.90, and this is equal to अगर हम 15 में से निकालते हैं
12.90, this will be equal to 1, and this will be the 2.1, and then change in output is how much? 1. So marginal cost for the 10th unit minus 10 is equal to 2.1 over 1, so that is 2.10. So this is how the firm, or as a business student, as a manager, you can calculate the marginal cost of a certain product. आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हाउ यू कैन कैलकुलेट, और आसानी से आप इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल लेके यू कैन इजीली कैलकुलेट द मार्जिनल कास्ट। यही चीज़ें जो अभी हमने एक टेबल के ज़रिए हमने बात की, उसी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट इन दिस स्लाइड अगर आप देखें, so this is we have tried to draw the total cost curve. We are measuring total cost on y-axis. On x-axis we are measuring quantity of output produced. The output is the product is lemonade and the glasses of lemonade per hour. So उसी टेबल में से हमने कोशिश की है कि टोटल कॉस्ट के ज़रिए अगेंस्ट डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। सो फॉर एग्जांपल जब आप ज़ीरो चीज़ प्रोड्यूस करें तो वी हैव $3। इसी तरह जब आप बढ़ाते जाते हैं तो वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स, जो अगर आप देखें आपको डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट, एंड दीज पॉइंट शोज दैट डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड हैव डिफरेंट कॉस्ट। अगर इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हैं तो यू विल गेट द टोटल कास्ट कर्व। अब ये कास्ट कर्व क्या शो कर रहा है? व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग? This reflect that if firms continue to produce more, the total cost of the firm will continue to increase, but after certain point when the total product will reach at its maximum, अगर आप firm further continue करती है तो उसकी total cost मज़ीद बढ़ जाती है, and the curve start becoming steeper, and which shows that with increase in output the cost will increase more as compared to the previous unit of output produced. And these are the other types of cost curve जो कि हमने टेबल में बात की। We talked about average fixed cost, average variable cost, we have talked about the average total cost, right, and then the marginal cost. अगर आप देखें तो they have different shapes. Suppose if we talked about average total cost की जब हम बात करते हैं तो this is almost U-shaped, that in the beginning when the firm start producing and continue to produce, the average cost is decreasing, so that's why it's coming down from top to down. So at certain point where marginal cost is intersecting the average cost curve, at this point average cost is minimum, and if we compare this point corresponding to the production function and different productivity measure, तो यहाँ पे जहाँ पे average cost minimum है, total product जो होती है firm की वो maximum होती है। अगर if the firm continue to produce after this point, so what will happen? उसकी जो average total cost है, it start increasing, right, and total products start going down, right? So average total cost curve is almost U-shaped, कि पहले कम होती है और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट बढ़ती है, reaches this minimum and corresponding to this point on the other side we have the total product which is maximum, and after this point अगर फर्म मज़ीद पैदा करती चीज़ें प्रोड्यूस करती है तो एवरेज कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। Similarly, we have two other curves, average variable cost curve and average fixed cost. इन दोनों को मिलाएं तो we'll get the average total cost curve. Now we'll talk about the shape cost curve and their shapes. अभी भी हमने बात की, इनको इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस डायग्राम में देखें तो we have only marginal cost curve. So marginal cost rises with the amount of output produced. This reflects the property of diminishing marginal product, right? अगर आपकी marginal cost बढ़ती है तो क्या होता है, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है
वो कम होती है। और आप इसको रिलेट, यू हैव टू रिलेट कास्ट विद प्रोडक्टिविटी। तो जब हम बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, तो दूसरी साइड पे, प्रोडक्शन साइड पे, प्रोडक्टिविटी साइड पे हम बात करते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगी वो कम होती है, कम हो रही होगी। और दिस सॉर्ट ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट reflect the property of diminishing marginal product। और अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट, द पॉइंट हाउ वी कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कर्व, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स के दरमियान। अभी आपने अगर देखा होगा पिछले डायग्राम में हमने देखा द पॉइंट वेयर द एवरेज कास्ट इज मिनिमम, at that point marginal cost and average cost are equal. Marginal cost is intersecting the average cost curve. So this point is known as the most efficient production point of the firm, where marginal cost is equal to the average total cost, and both curves, marginal cost and average total cost curve, intersect each other. So this is how we can, this is the most efficient point, and at this point the total output produced of the product is maximum at this point, where MC is equal to average total cost curve. We'll continue to explain the shapes of the cost curve, as we have seen that the average total cost is U-shaped. U-shaped means like this. Now it starts going down in the beginning when the firms start producing and continue to increase the output, and it reaches at its minimum level, and corresponding to this minimum level the total output is at maximum level, and after this if the firm continue to increase it, the average total cost start increasing. Now the shape of this average total cost curve, why this shape of this average total cost curve is U-shaped? This is because of the law of diminishing marginal returns. What is that? How we can relate? पिछले लेक्चर में हमने देखा, जब हमने डिफरेंट प्रोडक्टिविटी मेजर्स की बात की, तो उसमें हमने देखा कि इनिशियली द प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। जब हमने फर्स्ट स्टेज की बात की, द मार्जिनल प्रोडक्ट और द मार्जिनल रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग एंड टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. When we entered, or the firm entered into the second stage of production, total product is increasing but marginal products start declining after that point, right? So, and reaches, and when the total product reaches at its maximum level, ये हमने देखा, the marginal product is 0. Now if the firm continue to produce after that point, which is the total product maximum point, the marginal product becomes negative. So we have seen in the first stage, when total product is increasing, marginal product was also increasing, and that stage is known as the increasing marginal return to scale. And the second stage, where total product is increasing, marginal product is 0, and that is the decreasing marginal return to scale. And the third, a constant return to marginal scale, and the last when marginal decreasing marginal return to scale, and the third is negative marginal return to scale. And this is all because of the law of diminishing marginal returns. What is that? If the firm continue to produce more, the firm additional marginal returns, the additional marginal product due to extra unit of output starts decreasing, right? So because of that law, the shape of the average cost curve is U-shaped. जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती है तो एवरेज कास्ट कम होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंचती है तो एवरेज कास्ट मिनिमम होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम डाउन शुरू हो जाती है, कम होना शुरू होती है, तो एवरेज कास्ट जो है वो बढ़ना शुरू. सो एवरेज कास्ट इज यू शेप्ड, एंड दिस एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. So at a very low levels of output, average total cost is high because fixed costs spread over only few units. But average total cost decline as output
increases. Average cost starts rising because every variable cost rises substantially after that point. And then the bottom of the U-shaped ATC curve occurs at the quantity that minimizes average total cost. So the point where average total cost is minimum, that is the point where average cost of the firm is minimum, and this quantity is sometimes called the efficient scale of the firm, efficient production of the firm. So where the average total cost of the firm is minimum, this point is known as the efficient scale of production of the firm. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे कि अभी हमने बात की कि एवरेज कास्ट कर्व इज यू शेप्ड, और हमने रिलेट, अगर पिछली एक दो स्लाइड पहले हमने रिलेट किया था कि हाउ दिस इज रिलेटेड टू द मार्जिनल कास्ट कर्व, और हमने देखा कि आप देखें इसमें सब जब आउटपुट बढ़ती है तो एवरेज कास्ट में कमी वाक़ होती है और ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है तो एवरेज प्रोडक्ट जो है मिनिमम लेवल पे पहुंचती है, एंड दिस इज द पॉइंट विच इज नोन एज द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। और उसके बाद एवरेज कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है जब टोटल प्रोडक्ट कम होती है। और आप हमने रिलेट किया कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, वहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी उसके बराबर होती है। So we have already explained this relationship between marginal cost and average total cost. I can review from this slide. When marginal cost is less than the average total cost, or average total cost is falling, right? When marginal cost is greater, then the average total cost is rising, right? तो अगर आप ग्राफ दोनों के देखें, आपने देखा होगा कि अगर हम पीछे जाते हैं ग्राफ जहाँ पे दोनों हमने इकट्ठे बनाए थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों की अगर आप शेप देखें तो जब व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो देन द एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज अबव देन द एवरेज टोटल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, right? So the marginal cost crosses the average total cost at a efficient scale. Efficient scale is the quantity that minimizes average total cost. तो तीन तरह के रिलेशनशिप आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हमने देखा कि जब marginal cost is below than the average cost तो average cost is falling. When marginal cost is above than the average cost, when we talk about average cost, it means average total cost all the time. So when marginal cost is above than the average cost, in that case average cost is rising. And the third, which is the efficient point, efficient scale of production, where marginal cost is equal to the average cost, and this is the point where the firm is producing at efficient level, maximum is being produced, and the cost of the firm is minimum. We will continue with the same concepts, different types of cost, और हम कोशिश करते हैं किसी एक और एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करने की। The production of bagel and bagel cost curve, how much the firm has to bear to produce this product, quantity of bagels produced per hour in the first column। दूसरे कॉलम में देखें total cost है which is equal to fixed cost plus variable cost। तीसरे कॉलम में हम fixed cost की बात कर रहे हैं, चौथे कॉलम में variable cost को हम मेजर कर रहे हैं, पांचवें में average fixed cost which is equal to fixed cost divided by quantity produced, and then average variable cost divided by variable cost, average total cost, and then marginal cost. So as we have described earlier, जब 0 units of producer होते हैं तो but at that time there is certain type of cost and which is the fixed cost, and here in this case it is $2, and then the total cost is again 2, variable cost is 0, no every fixed cost, no every variable cost, no every total cost, because you know when you want to calculate every cost whether it is fixed, variable or total cost, you have to divide
the corresponding fixed cost, variable cost and total cost by quantity, and quantity is 0, so we have no average fixed cost, average variable cost and average total cost in this case. जब एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं आप, so then we have a total cost which is 3, and if where the fixed cost is 2 and variable cost is 1, and here we can calculate average fixed cost 2 by 1 and 2, and average variable cost divided by quantity, which is 1 by 1, and average total cost, which is 3 by 1, and then marginal cost, which is the change in total cost, which is 3 minus 2, which is 1, and then 1 minus 0 divided by 1 minus 0, which is 1, so it is 1. Similarly, you can continue and continue up to the 14th unit. अब जब 14th unit आप produce करते हैं bagel का, then what is the total cost? Here 17.8. Fixed cost is the same, which is $2, and variable cost will be here 17.8 minus 2 is 15.8. Then average fixed cost is 2 fixed cost by quantity, which is 2 by 14.14. Then average variable cost is the variable cost, which is 15.8 by quantity, which is 1.3. और एवरेज टोटल कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके हैं एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए. वन इज दैट इफ यू डिवाइड द टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, दिस विल गिव यू द एवरेज टोटल कॉस्ट. or what you can do that if you add up average fixed cost plus average variable cost, this will also give you the average total cost. And the marginal cost of the last unit, which is 14th unit, will be the change in total cost, which is 17.8 minus 15.6 divided by 14 minus 13, which is 2.20, and that is the marginal cost of the last unit produced by the firm. Is table say what the curve which we can get of total cost curve is of this shape, and you can see that it is increasing with the increase in unit of output. Y axis पे हम total cost को measure करें, X axis को हम quantity of out produce हम measure करें, right? So अगर आप देखें कि what this curve shows basically with the increase in quantity of output produced, which is bagels per hour, so the total cost of the firm is increasing, right? Here we can see the shape of other cost curve from this table. So we can see that we have अगर आप देखें जितने भी आपके average total cost है या average variable cost है, these are the U-shaped cost curve, और marginal cost curve is also U-shaped. And अगर आप explain करें इस relationship को जैसा कि हमने पहले explain किया, so these curves reveals three important properties. One, marginal cost eventually rises with the quantity of output, right? So जब आपकी quantity continue रहती है, when you continue to produce more units of output, so what will happen? Marginal costs start eventually rising with the quantity of output increasing. The average total cost is U-shaped, and as I explained it earlier, this U-shaped is because of the law of diminishing marginal returns, that first with the increase in output, average cost go down. When the total product reaches its maximum, average cost is minimum. When total products start declining, average cost start increasing. So the U-shape of average cost curve reflect the phenomena of law of diminishing marginal returns. Now the third property which these curves reflect is that the marginal cost curve crosses the average total cost curve at the point where ATC, the average cost, is minimum. As I said earlier, ये ऐसा point है which is known as the efficient scale production of the firm. At this point, the firm is producing at maximum level of output, जहाँ पे firm की जो average total cost है वो minimum है. So this is a point where total product is maximum, average total cost is minimum, and this point is known as the efficient scale of production. Why we call it efficient scale of production?
because if the firm continue to produce after this point, what will happen? Its total products start declining, and then declining, and then marginal products become negative. So it is better for the firm to stop at this point, and which is the most efficient point, where average cost is minimum and total products is already reached at maximum level. So as we explained that these curves reflect three properties. One, marginal cost eventually rises with the quantity of output. Average cost curve are U-shaped. And the third, marginal cost curve crosses the average total cost curve at the point where average total cost is minimum. अगर आप इन कर्व्स को ड्रा करेंगे और खुद से ड्रा करें and then try to explain the relationship, I hope you can understand and you can explain it very easily. अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो then it would be probably difficult. तो कोशिश करें कि टेबल के ज़रिए जो अभी हमने देखे, दो टेबल्स हमने देखे हैं, दोनों टेबल्स को आप बनाएं, डिफरेंट मेजर्स ऑफ कास्ट को कैलकुलेट करें और उसके बाद कोशिश करें कि यू ट्राई टू ड्रा different cost curve and try to explain the kind of relationship between these different types of cost of curve. Now, so far we have talked about the different types of cost curves, and all these cost curve and the shape of these cost curve were in the short run. Now, for many firms, the division of total cost between the fixed and variable cost depends on the time horizon. अगर आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बात की that all firms or every firm has to face two time period. One is the short run, the other is a long run. हमने बात की short run एक ऐसा time period होता है जहाँ पे कैपिटल फिक्स होता है और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली लेबर. सो अगर फर्म चाहती है कि ही प्रोड्यूस मोर और सम प्रोडक्ट और लेस ऑफ सम प्रोडक्ट, सो ही कैन ओनली डू दिस बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर ओनली बिकॉज कैपिटल इज फिक्स्ड एंड बिकॉज द टाइम पीरियड इज शॉर्ट विद द फर्म. And then we have also talked about in the previous lecture about the long run, in which all factors of production are variable. So there is no fixed factor. So firm can change the capital. They can buy a new land. They can build a new building. They can install new machinery. They can install new plant for the production of goods. Right. So because the firm has enough time. Right. So firms. Division of total cost depends between fixed and variable cost depends on the time horizon. So as we said that in the short run some variable are fixed, so some costs are fixed in the short run that cannot be changed. In the long run, fixed costs can also become the variable cost because many costs are fixed in the short run but variable in the long run. So a firm long run average cost curve differ from the short run average cost curve. जैसा कि हमने कहा कि लॉन्ग रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, इसी तरह कुछ वेरिएबल होते हैं. तो कॉस्ट जो है, देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल. तो हम कह सकते हैं जो शेप है कॉस्ट कर्व की दैट मस्ट बी डिफरेंट बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. तो इस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करेंगे अगले डायग्राम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेप इन द कॉस्ट कर्व in the short run and in the long run. Now this distinction between the short run and the long run tells us that the shape of the short run and the long curve must be different, and now we can explain this difference between the shape of the cost curves. यहाँ पे अगर देखें जैसा कि हमने कहा कि short run is the time period in which certain variables are fixed and long run is the time period where all factors of production are variable. So firm can install new machinery, new plants. So how we so with the help of this concept we can draw the long run cost curve. अगर आप देखें तो we are in this diagram again उसी तरह y axis पे cost measure कर रहे हैं और x axis पे quantity of cars produced per day. So we have different short plants which are in the short run, like ATC in the short run with small factory
ATC in short run with medium factory, ATC in short run with large factory. So we have three different plants in the short run, like first plant and we have an average cost curve, ATC 1, ATC 2, ATC 3, right? Three cost curve. So we have a minimum points. So what is the minimum, what is the efficient point in these three short run cost curve? That is the point where average cost is minimum. तो तीनों plants में, तीनों factories की बात करें अगर आप, तो जो minimum point है इन तीनों cost curve का, that is the efficient point. And if we join the minimum point of all these three curves, so this will give us the long run average cost curve. अगर आप देखें, the shape is very much different from the short run average total cost curve. द मिनिमम जो कॉस्ट है वो एक लॉन्ग अरसे के लिए रहती है, बट अगर यहाँ पे देखें शॉर्ट रन में तो जो मिनिमम कॉस्ट का जो पॉइंट है वो एक थोड़े अरसे के लिए रहता है, और उसके बाद अगर फर्म प्रोड्यूस करती है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो राइज करना शुरू कर जाती है. बट इन द लॉन्ग रन दिस मिनिमम point remain for certain periods. If the firm continue to produce more unit of output, so its average cost will remain same in the long run. So long run average cost curve is the combination of the minimum points of the short run average cost curve in different plants, right? तो जैसा कि हमने कहा कि तीन तरह के plants हैं, तीन तरह की factories हैं, और we have a average cost curve for each factory, and if we join the minimum point of all these cost curve, we will get the long run average cost curve, and this explains the difference between the shape of average cost curve in the short run and in the long run. Now we'll try to explain, we'll extend this short run and long run, the shape of the cost curve, to the concept of economies and diseconomies of scale. Now economies of scale refers to the property where by long run average total cost falls as the quantity of output increases. तो जब हम economies of scale की बात करते हैं, so that is that part of long run average cost curve which declines or falls as the quantity of output increases. Diseconomies of scale refers to the property whereby long run average total cost rises as the quantity of output increases. And the third possibility is constant return to scale refers to the property where long run average total cost stays the same as the quantity of output increase. So three possibilities in the long run. This long run average cost curve explain the three possibilities. So when it is decreasing, so this explains the phenomena that when average cost, long run average cost is falling and the output correspondingly the output is rising. So this explains the concept of economies of scale. And when average cost curve is increasing or rising, so corresponding to the increase in quantity of output, so in that case this explains the diseconomies of scale. So when there is same increase in quantity, same increase in cost, so that explains the property of constant return to scale. So we can explain this phenomena with the help of a diagram also. If you see in this diagram, we have the similar three different average total cost curve. ATC in short run with small factory, ATC in short run with medium factory, ATC in short run with large factory. और हमने इनके minimum points को मिलाया तो हमें what we got is the ATC in the long run. तो इस अगर long run which is in the red line, so अगर हम इसके तीन हिस्से हैं, अगर आप देखें, first part when ATC long run average cost is falling, तो इस portion को हम this explain the concept of economies of scale, because average cost is falling with the increase in output is increasing. तो इस phenomena को हम कहते हैं economies of scale, जब cost कम हो रही हो और output बढ़ रही हो, and this is known as the economies of scale. अब दूसरा जो इसका हिस्सा है जहाँ पे
every cost is constant but output is increasing. This phenomena is known as constant return to scale. The third part of this curve shows diseconomies of scale, and अगर आप देखें कि इस part में the cost, every cost is rising with output is increasing, right? So this portion or this the part of cost, every cost curve explain the diseconomies of scale. So we can explain and we can divide economy into three parts: economies of scale, constant return to scale, and diseconomies of scale. And the shape of long run average cost curve can explain these three possibilities, these three properties. और हमने देखा कि जब average cost curve कम होती है with increase in output, तो this is known as the economies of scale. जब average cost same रहती है, output बढ़ती है, and that is known as the constant return to scale phenomena. और जब हम diseconomies की बात करते हैं तो average cost is rising with the increase in output, and that explains the phenomena of diseconomies of scale. Now this was the last part of our today's lecture. अब हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आज हमने सीखी, I will try to sum up all those things in 5 to 10 minutes. What we have learned today, we have learned about different types of cost. We have talked about average total cost, and which is divided into two parts: average fixed cost and average variable cost. And how we can calculate average total cost, that is the average total cost is equal to the total cost divided by the quantity of output produced, give us the average total cost. And then we have talked about the marginal cost, and we said that it is the total cost, change in total cost due to change in output, right? So whenever we want to measure the marginal cost of output, so it is calculated as marginal cost is equal to change in total cost due to change in output. अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पे कास्ट जो है, टोटल कास्ट जो है 1000 रुपये आ रही है, और अगर आप 101 यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उस पे कास्ट 1100 रुपये आती है, एंड सो व्हाट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट? हाउ मच इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट? दैट इज 1100 minus 1000, it is 100, and the change in output is 101 minus 1, that is 1 unit. So marginal cost of the last unit is almost 100. So that is the change in total cost due to change in output. So marginal cost always rises with the quantity of output. Average cost falls as output increases and then rises. So this is what we learned, and after this we have discussed all types of costs with the help of table and diagrams, and said that average cost curves is U-shaped. Now why average cost curve are U-shaped? And the shape of average cost curve explain the phenomena of law of diminishing marginal returns. So first, when the average cost is falling, total product is increasing. When average cost reaches its minimum, total product is maximum. When average cost starts rising, total product starts falling. So this, because of this reason, we can say that the average total cost is U-shaped. First it comes down, remain constant, reaches its minimum level, and where average cost is minimum, that is known as the most efficient scale of the firm. And at this point, marginal cost always cross the average cost at the minimum of ATC. A firm cost often depends on the time horizon. So उसके बाद हमने बात की डिफरेंट टाइम हॉरिजन के. हमने कहा कि जो फर्म की कास्ट है, इट कैन वेरी इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. हमने ये कहा कि देयर आर 2 टाइम्स पीरियड्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात की. हमने ये कहा कि शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं कैन बी चेंज. तो the cost of fixed factor remain fixed in the short run, and the variable cost will be only for the variable factors of production. But हमने ये बात की कि in the long run all factors of production are variable, and
so we have the variable cost for all the variables. There is time with the firms in the long run that they can build new buildings, they can buy new machinery, they can install new plants, new machinery, new equipments. So in the long run, all factors of production are variable, so the all costs are variable. Now उसके बाद हमने बात की, we have tried to differentiate between the shape of the cost curve in the short run and in the long run. हमने ये कहा कि long run average cost curve is the combination of the minimum points of different plants average cost curve in the short run. जैसा कि अगर आपको याद होगा कि इसको हमने एक्सप्लेन किया, हमने कहा कि we have different plants in the short run, like we have ATC for the small factory, we have ATC for the medium size factory, we have ATC for the large size factory. अगर हम तीनों जो ATCs के मिनिमम पॉइंट्स हैं उनको मिला लेते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व आ जाता है. और हमने देखा कि दोनों में की शेप में जो है काफ़ी फ़र्क है. जो minimum point है for the short run average cost curve that remain for only short term period, and after this if the firm continue to produce तो average cost बढ़ना शुरू हो जाती है. लेकिन अगर हमने देखा in the long run the minimum point or the of average cost curve remains constant for long period as output increases. So this explains the difference in the shape of the short run average cost curve and the long run average cost curve. उसके बाद हमने बात की, we have tried to explain the concept of economies of scale, diseconomies of scale and constant return to scale. हमने देखा कि जब average cost curve, long run average cost curve is falling, when long run average cost is declining, तो क्या होता है कि output with increase in output, so this part of long run average cost curve is explaining economies of scale. And then when average cost curve, long run average cost is constant for a long term period with increase in output, so that explain the constant return to scale. And the third part of the cost curve in which average cost is rising, that explain with increase in output, that explains the diseconomies of scale. क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट के बढ़ने के साथ जब आपका कॉस्ट बढ़ती है तो इसको हम डिसइकोनॉमीज कहते हैं. इसको हम डिसइकोनॉमीज, इसमें फर्म्स को फ़ायदा नहीं है प्रोड्यूस करने का. इसके बाद आप फर्म्स को स्टॉप करना चाहिए मिनिमम एफिशिएंट स्केल के बाद. दे शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग. अगर इसके बाद प्रोड्यूस करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ने के साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है. जब उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो हम कहते हैं कि फर्म को डिसइकोनॉमीज, इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है. तो for the firm to produce, or the efficient point is the point where the cost of the firm is minimum. As this is the overall. तो यहीं पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. तो आई हैव समराइज ऑल दोज मेजर पॉइंट्स जो कि आज हमने सीखे, जिनकी हमने बात की. तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा घर जाके, ट्राई टू ड्रॉ ऑल दीज ग्राफ्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर. टेबल को भी बनाएं, उससे ग्राफ को बनाएं, फिर ट्राई टू एक्सप्लेन द शेप और द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट कर्व, एंड देन ट्राई to link up these cost curve with production, and then आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. राइट. तो ये जो आज हमने सीखा आज के लेक्चर में, दिस प्रोवाइड अस बेस फॉर द सब्सिक्वेंट लेक्चर जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे. तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड all these concepts which we have learned today, और आप इनको घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा. आज के लिए अल्लाह हाफिज़, और आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस अस ऑल.